What is Internet? In this video tutorial, we are going to learn and discuss about Internet, how it works, how to connect to the Internet, how to access it, what is search engine, what is website and its examples, different social media platforms. So let's start. What is Internet? The Internet is an increasingly important part of everyday life for people around the world. The Internet is a global network of billions of computers and other electronic devices. With the Internet, it's possible to access almost any information, communicate with anyone else in the world, and do much more. You can do all of this by connecting a computer to the Internet, which is also called going online. When someone says a computer is online, it's just another way of saying it's connected to the Internet. Internet is a collection of different networks. We call it a global network. दुनिया के अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब आपस में कनेक्ट होते हैं हम उसे इंटरनेट कहते हैं. इट्स अ कलेक्शन ऑफ लार्जर नेटवर्क्स. आज के दौर में हर इंसान इंटरनेट यूज़ करता है, चाहे वो एजुकेशनल पर्पस हो या ऑफिस का वर्क हो या सोशल मीडिया हो. हर इंसान इंटरनेट को किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है. टर्म ऑनलाइन का मतलब है आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड है और आप उसको यूज़ करते हुए प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सकते हो या इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो. हाउ डज इंटरनेट वर्क? द इंटरनेट वर्क्स थ्रू अ सीरीज ऑफ नेटवर्क्स दैट कनेक्ट डिवाइसेस अराउंड द वर्ल्ड थ्रू टेलीफोन लाइन्स. Users are provided access to the internet by internet service provider companies. The widespread use of mobile broadband and Wi-Fi in the 21st century has allowed this connection to be wireless. What is ISP? Internet Service Provider is a company that provides internet connections and services to individuals and organizations. For instance, PTCL, Strong Fiber, and RedTribe. PTCL is the most common example of ISP in Pakistan. Internet काम कैसे करता है? As we all know that the internet is a combination or collection of different networks. Users टेलीफोन लाइन्स के थ्रू इन नेटवर्क्स को एक्सेस करते हैं. एंड ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, ये एक्सेस यूजर्स को प्रोवाइड करती है. ISP ये कनेक्शंस इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करती है. यूज़र्स इन कंपनीज की सर्विसेज को यूज़ करके इंटरनेट को एक्सेस करते हैं एंड देन इंटरनेट पे ऊपर टास्क परफॉर्म करते हैं. PTCL हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है एंड हम उस सर्विस को यूज़ करते हुए इंटरनेट को यूज़ करते हैं. हम इंटरनेट को यूज़ करते हुए डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, चाहे गूगल के अंदर सर्च करना, ईमेल करना, चैट करना या फिर सोशल मीडिया को यूज़ करना. सारे काम हम इंटरनेट के ऊपर ISP सर्विस प्रोवाइडर की दी हुई सर्विस के थ्रू करते हैं. हाउ टू कनेक्ट टू द इंटरनेट? Here are 3 easy steps to connect your device to the internet. Step number 1. Choose a particular ISP, Internet Service Provider company in your city or area. For instance, in Pakistan, we have PTCL, which is the most common company which provides internet services. The second step is install and set up your router or modem, which is a network device provided by ISP. Nowadays, mostly companies are providing wireless routers for connectivity. The third step is connect your device to the internet. अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कैसे करें? 3 इजी स्टेप्स हैं. सबसे पहले आप एक ISP कंपनी चूज़ करें जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही हो, लाइक PTCL इन पाकिस्तान. देन वो सिलेक्टेड कंपनी आपको एक डिवाइस जिसे हम राउटर या मोडेम कहते हैं वो प्रोवाइड करेगी. देन उस राउटर या मोडेम को आप कनेक्ट करेंगे अपने जो भी नेटवर्क के डिवाइसेस होंगे उनके साथ. देन आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल को उस नेटवर्क डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे एंड इंटरनेट को यूज़ करेंगे. How to access the internet? Web browser software applications. A web browser is an application software used to access and view websites. Common web browsers include Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, and Apple Safari. A web browser takes you anywhere on the internet. It retrieves information from other parts of the web and displays it on your desktop, laptop, or mobile device. How to use or access internet? हम इंटरनेट को यूज़ या एक्सेस कैसे कर सकते हैं? उसके लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिनमें वेब ब्राउज़र एक बहुत कॉमन एप्लीकेशन है. इंटरनेट को यूज़ करने के लिए हम वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हैं. मुख्तलिफ़ कंपनीज़ मुख्तलिफ़ वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कर रही हैं जिनमें गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स एंड एप्पल सफारी टॉप पर हैं. मोस्ट कॉमन वेब ब्राउज़र इज़ गूगल क्रोम.
हम वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए किसी भी वेबसाइट को व्यू कर सकते हैं या उस वेबसाइट के ऊपर काम कर सकते हैं। हम अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस के अंदर वेब ब्राउज़र को इंस्टॉल करके उसकी मदद से डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं और उनके ऊपर वर्क भी कर सकते हैं। What is Google? Google is a search engine or a website on which we search different informations. Google Chrome is a web browser. It is an application software used to access and view websites. Google.com is primarily known around the world as an internet search engine. We can also call it a website. A website is simply a collection of web pages for displaying information on the internet. A web page is a simple digital document displayable by a web browser. Web pages can contain text, animations, audio and video content. Google.com is a search engine on which we search different informations, different terms. Google क्या है? Google एक वेबसाइट है जिसे हम सर्च इंजन भी कहते हैं। हम इस वेबसाइट पर डिफरेंट टर्म्स को सर्च करते हैं। हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, हम google.com वेबसाइट को ओपन करके उस सर्च इंजन के अंदर टर्म को सर्च करते हैं। उस सर्च इंजन के अंदर हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन या नॉलेज गेन करते हैं। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम किसी भी वेबसाइट को व्यू कर सकते हैं। वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। वेब पेज एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है जिसे हम वेब ब्राउज़र के अंदर एक्सेस करते हैं और उस डॉक्यूमेंट के अंदर एनिमेशन, टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट हो सकता है। हम किसी भी तरह का कंटेंट उन वेब पेजेस के ऊपर रखते हैं और वेब ब्राउज़र के थ्रू उन वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं या उस कंटेंट को व्यू करते हैं। वेबसाइट एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। होम पेज, the first web page that is displayed after starting a web browser or opening any website by giving website address in the web browser is called home page. URL, Uniform Resource Locator, is the address of a web page like https www.google.com. What is HTTPS? Hypertext Transfer Protocol Secure. It is an internet communication protocol that secures the communication between the user's computer and website. World Wide Web. www is a collection of information that is accessed via internet. वेबसाइट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। जब भी हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए उसका एड्रेस वेब ब्राउज़र के अंदर इंसर्ट करते हैं तो जो सबसे पहले पेज हमें नज़र आता है उसे हम होम पेज कहते हैं। फॉर इंस्टेंस हम google.com वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो सबसे पहले उसका इंटरफेस या उसका वेब पेज हमें नज़र आएगा वही उसका होम पेज होगा। URL किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को कहा जाता है। HTTPS एक इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि सिक्योर करता है कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर्स कंप्यूटर एंड वेबसाइट। www is a collection of information that is accessed through internet. हम जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू रिट्रीव करते हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर होती है जिसको हम एक्सेस करते हैं। Let's see few examples of websites. https www.acf.org.pk is a web address of educational organization Sindh Education Foundation, Government of Sindh. educators.edu.pk is a web address of educational network The Educator. www.sharefashionfit.com is a web address of an e-commerce store. parkrail.gov.pk is a web address of Pakistan Railways. Sports.tv is a web address of Pakistan's first HD sports channel. These are the examples of few websites. By using these web addresses, we can access these websites and view their home pages. Media platforms. Websites and applications that enable users to create and share content or participate in social networking. Examples of different social media networks are given here. Few examples of social media websites and applications are Facebook, Pinterest, YouTube and Twitter. Social media is a collection of different websites and applications जो कि हमें अलाउ करती हैं कि हम अपनी कंटेंट को शेयर करें। Facebook, Pinterest, YouTube and Twitter are the common examples of social media platforms. हम सोशल नेटवर्किंग में इन एप्लीकेशंस को और वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं। Well, that's all about this tutorial. I'll see you next. Thank you.